ओके तो उसके अंदर जो है हेरिडिटरी वेरिएशन देयर इज द सेकंड पार्ट ओके देयर इज द हम लोग प्रीवियस टेक्स्ट में क्या पढ़ा था इज द सेंट्रोमियर ओके ओके देयर इज द फर्स्ट मेटासेंट्रिक द नेक्स्ट इज द सब मेटासेंट्रिक द सब मेटासेंट्रिक मींस देयर इज द सेंट्रोमियर इज द सेम वेयर नियर द पॉइंट इन दिस क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर जो है मतलब ये सेंटर इन द पार्ट ओके तो क्या रहेगा क्रोमोसोम के नजदीक रहेगा किस तरह से रहेगा क्रोमोसोम के नजदीक द क्रोमोसोम देयर इज द इंग्लिश एंड इज द येलो ओके there is a chromosome the number is 2 4 5 6 7 8 9 10 12 17 18 there is a X chromosomes are in the sub metacentric the metacentric means they are the female chromosome are present okay X means female chromosome the third is the acrocentric the acrocentric means there is a centromere is the near the end तो इसके near the end तो क्या होता है near the end of this chromosome it looks like the English letter is a J English letter is a J the one arm is much small than other तो इसके अंदर एक आर्म है एकदम स्मॉलर है और एक आर्म है लॉन्गर है is a J the chromosome numbers 13 14 15 22 21 the chromosome is a Y there is a male chromosome okay next point is a telocentric the telocentric means they are the telophase the telocentric means they are the telophase they are the last process of the meiosis okay the centromere is the right end of this chromosome it is the English letter is the I it is the English letter is the I the consist only one arm इसके अंदर क्या एक ही arm ठीक है one arm there is a no telocentric chromosome तो इसके अंदर एक भी क्रोमोसोम नहीं है ओके आगे देखो चलिए इसके अंदर क्या दिया है the concept in the sex determinations there is a chromosome okay the types of a chromosome okay the types of a chromosome there is a somatic the mitosis division they are the somatics and meiosis division they are the germ cell okay the 46 chromosome they are divided the 22 chromosomes they are the autosomes and one chromosome is the sex chromosome they are the sexual reproduction the sexual reproduction is the fertilization the fertilization after the few months they are the zygote is the first cell of a baby the next is the after the process there is a DNA क्या है बच्चों DNA means क्या होता है बच्चों deoxyribonucleic acid the D के अंदर क्या रहेगा option of oxygen the first point DNA is a double strand क्या है DNA is a double strand the double strand DNA the structure are given the discovered by the Watson and Crick क्या है Watson and Crick ने इसको क्या किया था डिस्कवर किया था so DNA is made up of two parallel देखो बच्चों two parallel okay two parallel okay they are the intersect कुछ okay two parallel strands are coil means मेन जो बांधता ना coil around the each the other is a double so bone This strand is made of long chain of a nucleotide. Nucleotide. इसके अंदर phosphate group पहले होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग nucleotide. The DNA is the long chain is the nucleic acid. Long chain is called as the nucleic acid. The nucleic acid is discovered by a Swiss biochemist. Bio means biology. Chemist means chemistry. They are the scientists. They are the discovered in the nucleic acid. There is a patent research in the 1869. They are the cell. Which cell is a white blood cell के अंदर उन्होंने क्या किया था nucleic acid को find out किया था. The next point is the DNA is called as a master molecule. जब तक तुम लोग की बॉडी के अंदर DNA तब तक तुम लोग की बॉडी जिंदा है. Okay? तो मास्टर मीन्स सेल डिविजन त्याला मराठी म्हणतात पेशी विभाजन काय म्हणतात पेशी विभाजन नंतर बायोकेमिस्ट प्रोसेस तो बायो के अंदर केमिकल का प्रोसेस हो रहा है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल का प्रोसेस हो रहा है ग्रोथ मीन्स क्या हो रहा है देयर इज द ग्रोथ the body are present in the interferon live in the protein there is a growing the height the DNA means they are the pentose sugar the option is the oxygen